हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु गर्ग और मैं इस चैनल पर आपको साइंस की वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं आपको एनएसओ की तैयारी करवाऊंगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन का मतलब होता है द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। हम कैसे फूड लेते हैं और उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। और उसमें हम वो पढ़ने वाले हैं प्लांट्स में। ये 7th क्लास का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का। बट मैं हमारी रेफरेंस से करता हूँ क्योंकि एनएसओ में रेफरेंस से ही आता है मोस्टली क्वेश्चंस। तो फर्स्ट कंटेंट्स में है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। Plants play role of producers in nature. Plants प्रोड्यूस करते हैं नेचर में, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स विच प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स और बीइंग्स। प्लांट्स हमारे लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए, जो हिटोट्रॉप्स हैं, जो फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, उनके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं और वो अपने लिए भी फूड प्रिपेयर करते हैं। They utilize sun's radiant energy and convert into chemical energy. Sun की radiant energy, radiant means sun energy, sun धरती पर एनर्जी को रेडिएशन से भेजता है, इसलिए सन की एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, वो जो प्लांट है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इन दिस वे, इसी तरीके में प्लांट ऑल्सो प्ले रोल ऑफ कन्वर्टर। इसी वे में जो प्लांट है वो किसका काम करता है? कन्वर्टर का। प्लांट्स यूज सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट यूज सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट, जो सन की रेडिएंट एनर्जी होती है, उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। वेट प्लीज। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर। द प्रोसेस इन विच द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड in presence of light and other raw materials to prepare food is called photosynthesis. So ये तो हुई डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस कैसे होती है और फोटोसिंथेसिस का mechanism of photosynthesis. Firstly, there is a formula or a mechanism of how the plant uses sunlight. In presence of 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water and in presence of light and chlorophyll, plant convert 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water to carbohydrates or glucose plus oxygen and some ions of hydrogen. तो दोस्तों, अब आ गई हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। First step is chlorophyll traps the sunlight. Now a question is making that what is chlorophyll? Chlorophyll is a green pigment. Pigment means a thing which gives color to something, and chlorophyll gives color to the plants green color. Chlorophyll is a very important thing in a plant. Chlorophyll traps the energy of the sunlight.
means it captures solar energy or radiant energy of the sun. And second step is CO2 and water molecule used as a raw material. CO2 means carbon dioxide and water molecule that is H2 H2O means H have two bonds or hydrogen two bonds and one bond of oxygen is used as a raw material means kacha saman. Raw material means kacha saman. Now the chlorophyll convert the raw material into carbohydrate. It is a function of chlorophyll that the chlorophyll convert raw material into carbohydrate. जो chlorophyll होता है, chlorophyll pigment, green pigment, convert the raw material कच्चा सामान जो plants कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से लेता है और वाटर मॉलिक्यूल रूट हेयर से लीव्स तक जाते हैं, वो उसको फोटोसिंथेसिस के से वो कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन में. And oxygen is generated by product in this process. It is a main function of the plant. And the second function is that the plant make food for living beings. Second is requirement of photosynthesis means what is the required things, what is the जरूरत क्या ज़रूरतें हैं photosynthesis की. First one is the carbon dioxide. So carbon dioxide. Plants take up carbon dioxide. Plants take up carbon dioxide from the atmospheric air through stomata on the undersurface of leaves. Plants जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेते हैं? स्टोमेटा से. This is a leaf. And this is the undersurface of leaf, and there are many billions of stomata on in a leaf like this. You can see stomata undersurface of a leaf as if you have plant on your in your house. Second one thing is that guard cells regulate stomata, their opening and closing. And we know that we have to know that guard cells which protect stomata are known as guard cells. Guard cells control the stomata when the stomata has to open and when to close. So next is chlorophyll, which is the main thing of a plant. That is chlorophyll. It is a green pigment present in the leaf. I have tell you that it is green pigment. Pigment means which thing gives color to anything. Presents in leaf. वो चीज़ जो किसी चीज़ को कलर देती है उसको कहते हैं पिगमेंट. और जो क्लोरोफिल है वो प्लांट्स को ग्रीन कलर देती है. वो लीफ में ही प्रेजेंट होती है. कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. और जो क्लोरोप्लास्ट है वो पर स्क्वायर मिलीमीटर 5 lakhs approximately 5 lakhs of chloroplast are there. Wow, it's a fact. Chlorophyll captures solar energy during photosynthesis. जो क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है वो कब लेता है सोलर एनर्जी? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. एंड सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ photosynthesis is sunlight. Sunlight comes from the sun. It is essential as it provides energy required for the reaction. Now sunlight comes from the sun
जो सनलाइट होती है मीन्स रेडिएंट एनर्जी और सोलर एनर्जी, वो कहाँ से आती है? सन से. इट इज़ द प्राइमरी सोर्स बिकॉज बाय सनलाइट द रिएक्शन इज टेकन ऑफ. एंड नेक्स्ट इज वाटर एंड मिनरल्स. Roots of the plant, roots of the plant, sorry, water and minerals. Roots of the plant absorb water along with minerals from the soil and transport them to the leaves for photosynthesis. And then water and minerals is also the requirement for the photosynthesis, which is taken by root hairs to the leaves. So they are transported by a special kind of tissues which are known as xylem and phloem, which we have to learn in transportation chapter. So next is site of photosynthesis, means that where photosynthesis occur. It is very important part of NSO, National Science Olympiad. Photosynthesis occurs in chlorophyll of leaves and sometimes in the stems which are green in color. It is very important point that photosynthesis जो होती है वो कभी भी लीव्स में नहीं होती, क्योंकि स्टेम भी ग्रीन होती है कई प्लांट्स की लाइक हर्ब्स, and the photosynthesis then occur in also in the stem. So second important thing is that photosynthesis is primary source of food production for all living organisms. It is the main source for all living other organisms. If photosynthesis does not occur, then all living organisms will be die. Next point is it maintains balance and oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. How it maintains the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. जब लीव्स फोटोसिंथेसिस करता है, फर्स्टली ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, और एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एंड प्लांट्स ऑक्सीजन ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा. तो हमें इसमें ऐसे पता चलता है कि वो प्लांट्स हैं जो वो भी मेंटेन करके रखते हैं, क्या? मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड सेकंड वन एंड नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट. Non-green plants like bacteria and fungi do not contain chlorophyll. Non-green plants, there are also non-green plants. It's a common thing that bacteria and fungi do not contain chlorophyll. Fungi is a type of organism, microorganism, and it also a plant. So they prepare their food. They cannot prepare their food by photosynthesis. These types of plants are called heterotrophic plants. ये वाले टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इनको हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कहा जाता है. हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स are parasitic, saprophytes, and carnivorous and symbiotic. First one heterotrophic plant, parasite plants which depends on other living organism for their nutrition requirement are known as parasitic plants. तो guys, ये parasites जो प्लांट्स के किसी भी प्लांट्स के ऊपर क्लाइम करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं, वो होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स एंड दे आर नोन एज पैरासाइट्स. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स of mosquitoes are also parasites because they take blood from human beings to live. जिंदा रहने के लिए वो भी ह्यूमन बीइंग से ब्लड लेते हैं. Example is dodder amenable is a plant parasite which produce special sucking roots are called hostoria. It is important point for the NSO.
This is a plant, means this is a tree, and the hostoria is like root this. So we know that parasites, mostly parasites do like this. They produce a sucking roots called hostoria, and amiable is also known as cascata, and cascata is also known as dodder. तो इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट.